and in today's class I'm going to pick the JavaScript one. Okay, so this is your web dev beginners course, and this particular chapter is for JavaScript. So JavaScript, let's see the learning objectives. First of all, learning objectives देख लेते हैं फटाफट से कि क्या क्या learning objectives हैं इस particular slide के अंदर. And we have a lot in this one. So first of all, I will be telling you or giving you the introduction of JavaScript. Then we will see some history of JavaScript. Then there is something known as JSCRIPT. Is anyone here जिसने JSCRIPT के बारे में सुना है? Come on, yes or no in the chat box. No, no. JSCRIPT, come on. कभी तो सुना होगा. Never. Wow. Okay. No, it's not. It's not. It's not. It's not same as JavaScript. Both are different. Okay, चलो ठीक है. JSCRIPT नहीं सुना. Did anyone heard about ECMASCRIPT? ECMA, ECMA script, or you can say ECMASCRIPT, whatever you want to pronounce it. Nope. Oh, come on. JavaScript सबने सुना पर. Awesome. So, believe me, this session going to be very, very informative for you then. अगर ये सारे terms पहले नहीं सुने, ECMAScript, JSCRIPT, even एक और के बारे में बात कर लेंगे, which is nothing but your TypeScript. बहुत सारी scripting languages हो गई. All these languages work on your internet. Net पे web के लिए बनी थी सब languages. Okay, so चलो काफी informative होने वाला है फिर आज वाला session तो. Cool. So I will be talking about history of JavaScript. Then we will see JavaScript versus JSCRIPT, and then I will introduce you with the ECMAScript. फिर हम JavaScript के versions को देखेंगे. फिर system requirements, because we definitely want to write some code. तो system requirements क्या होगी और कौन से softwares आपको install करने हैं. So let me jump to the first slide, which is what is JavaScript. I believe my screen is shared. Voice is clear, loud and clear. Yeah. Um, yeah. Thanks for confirming. Cool. So let's answer this question. What is JavaScript? So JavaScript, first of all, it's the most popular programming language. Okay, आप कोई भी Stack Overflow एक सर्वे कराता है डेवलपर्स का, ऑलमोस्ट हर ईयर ही करा रहा है अब तो. सो Stack Overflow कंडक्ट द सर्वे, और उसके अंदर आप टाइप करते हो कि कौन सी लैंग्वेज आपको सबसे ज़्यादा पसंद है या फिर कौन से डेवलपर्स किस लैंग्वेज पे काम कर रहे हैं, एंड दे हैव अ वेरी नाइस सेट ऑफ रिजल्ट्स. बहुत मज़ा भी आता है उसके ऊपर. अगर आप मैटप्लॉटलिब वगैरह पाइथन में कभी ट्राई करो तो काफ़ी मज़ा आता है उसको काम करने में. चलो दैट्स अनदर थिंग. बट या और भी बहुत सारे हमारे पास इंडेक्सेस हैं. सो कुछ इंडेक्सेस को मैंने अपने सी प्रोग्रामिंग डेड वाले लाइव में भी कवर अप किया था. यू कैन चेक दैट लाइव पास्ट स्ट्रीम्स में जाकर के, या फिर मेरे यूट्यूब चैनल पे भी आपको मिल जाएगा सेम. एंड तो वहाँ पे आप देख सकते हो, वहाँ पर भी इन रिजल्ट्स में ये आया था कि जावास्क्रिप्ट इज एट द टॉप. तो इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं कि यार जावास्क्रिप्ट इज द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. एंड देन इट्स अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर योर वेब. ओके, आपके इंटरनेट के लिए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बिकॉज अभी तक आपने वेब में HTML देखा, दैट इज मार्कअप लैंग्वेज. वो उसमें आप प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते, फंक्शनैलिटीज ऐड नहीं कर सकते. देन आपने CSS देखा, वो डिज़ाइन लैंग्वेज था. सो अगेन डिज़ाइन और फंक्शनैलिटी का दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है. कांट डू दैट इन CSS. सो फाइनली वी हैव जावास्क्रिप्ट, जिसके अंदर आप एक्चुअली फंक्शंस बना सकते हो. एंड फंक्शंस बनाने से क्या मतलब, यू कैन ऐड फंक्शनैलिटीज लाइक वैलिडेशंस कर सकते हैं, यू कैन हैव अ वेरी नाइस ट्रांजिशंस भी कर सकते हो. इवन वी हैव सम लाइब्रेरी बिल्ट ऑन जावास्क्रिप्ट. फॉर एग्जांपल jQuery बहुत ही awesome लाइब्रेरी है, जिसको यूज करके आप लाइक कपल ऑफ लाइंस के अंदर, लाइक 1-2 लाइंस के अंदर, यू कैन हैव अ वेरी नाइस एनिमेशन ऑन योर वेबसाइट.
सो या उसमें डायरेक्टली आपको एनिमेशन के लिए फंक्शंस मिल जाते हैं, तो बहुत ईजी हो जाता है उसको वर्कआउट करना, बट इट्स बिल्ट ऑन जावास्क्रिप्ट. Now third point is general purpose, very lightweight and interpreted. Interpreted को या फिर आप जावास्क्रिप्ट के लिए वर्ड यूज कर सकते हो, जस्ट इन टाइम कंपाइल्ड. ओके. जनरल पर्पस का मतलब होगा कि यू कैन यूज जावास्क्रिप्ट फॉर एनी पर्पस. ओके, फॉर एनी पर्पस, लाइक even you can have the VRs using JavaScript. तो ऑग्यूमेंटेड रियलिटी जब आप एक VR पहनते हो, तो वहाँ पर भी जावास्क्रिप्ट को आप यूज़ कर सकते हो टू हैव दी नाइस आउटपुट्स. तो बहुत बहुत वाइड यूज है जावास्क्रिप्ट का. वी कैन हैव इट एनीवेयर. लाइट वेट है, बहुत ज़्यादा लोड नहीं डालता, बट येस इफ़ यू पुट अ लॉट ऑफ स्क्रिप्ट टैग्स. मैं आपको बताऊंगा कि स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट को एक्चुअली आप एम्बेड कैसे कर सकते हो एक HTML डॉक्यूमेंट के अंदर. बट अगर आप जावास्क्रिप्ट को काफ़ी टॉप पे रख देते हो, या फिर यू डोंट यूज अप्रोप्रिएट कीवर्ड्स या एट्रीब्यूट्स, तो आपके पेज लोडिंग को वो काफ़ी स्लो बना सकता है. बट JavaScript itself is not making that slow. It's about the tags and loading. So थोड़ा सा नेटवर्क का भी इन्वॉल्वमेंट है वहाँ पे, बट या एट द एंड ऑफ द डे JavaScript is lightweight. Then interpreted और just in compiled, दोनों ही वर्ड्स यूज होते हैं टू डिफाइन योर जावास्क्रिप्ट. तो इंटरप्रेटेड का वैसे मतलब होता है कि एक एक लाइन करके हम एग्जीक्यूट करते हैं जावास्क्रिप्ट कमांड्स को. ओके. जैसे इंटरप्रेटर और कौन सी लैंग्वेज है, पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो इंटरप्रेटेड है. या सो उसी तरह से जावास्क्रिप्ट भी इंटरप्रेटेड है, बट it's actually a combination of interpretation and compilation. क्योंकि जावास्क्रिप्ट अपने कोड को ना दो बार रीड करती है. या सो पहले वो पूरा का पूरा आपका कोड रीड करेगा, एक कॉन्टेक्स्ट मैनेजर में ऐड करता है. देन वी हैव डिफरेंट सॉर्ट ऑफ कंटेनर्स. या सो अलग अलग वेरिएबल इन्वायरमेंट होते हैं, वहाँ पर आपके एक्चुअली फंक्शंस को, वेरिएबल्स को रखा जाता है. सो दैट्स वाई आपने कुछ फेमस एग्जांपल्स या फिर फेमस इंटरव्यू क्वेश्चंस भी प्रॉब्ली कभी ना कभी तो सुने होंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन योर वैर को यूज़ करके जो आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हो और लेट को यूज़ करके जो वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, तो उनमें क्या डिफरेंस है, और स्ट्रिंग क्या होता है, राइट. सो एसिंक्रोनस होता है कि सिंक्रोनस होता है, क्या होता है, मल्टी थ्रेडिंग है या फिर सिंगल थ्रेड है. तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस, मोस्ट आस्क्ड या फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं इंटरव्यू के अंदर. सो वी आर गोइंग टू कवर ऑल दोज थिंग्स. इस पूरे कोर्स के अंदर ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाते हैं. सो या, बट अभी लेट्स से ऑन दी वेरी फर्स्ट स्लाइड अभी हमने स्टार्ट ही करा है, नाम गिव bombarding all those information. So don't worry, तो धीरे धीरे करके बिगिनर से एडवांस की तरफ मूव करेंगे. एंड फाइनली इट्स क्रॉस प्लेटफॉर्म यानी कि इट बिहेव्स सेम और इट रन्स ऑन एनी ऑपरेटिंग सिस्टम. आप अगर मैक में एक जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हो और विंडोज में उसको रन करते हो, तो इट विल रन, कोई इशू नहीं आएगा. सो इट्स अ क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज. Okay, and JavaScript start हुआ था for serving client sides. Client side मतलब जो आप यूज करते हो, फॉर एग्जांपल योर वेब ब्राउजर. ओके, उसके लिए एक्चुअली हम JavaScript को यूज करते थे. अभी भी क्लाइंट साइड पे JavaScript रूल्स. ओके, क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में JavaScript इज द वन जो रूल करता है. ओके, बट नाउ डेज नहीं, अब तो काफ़ी साल हो गए. JavaScript is also working at the backend side, server side programming language. मतलब सर्वर में भी आप JavaScript को यूज़ कर सकते हो. सो इससे क्या होता है, एक एडवांटेज मिल जाता है. इफ़ यू लर्न HTML CSS JavaScript, तो अब आप फ्रंट एंड तो जान गए हो. नाउ JavaScript कैन बी ऑल्सो यूज फॉर बैकेंड, तो आप बैकेंड में भी बहुत इजीली स्विच कर सकते हो. तो ये फायदा होता है, इसलिए काफ़ी सारे लोग प्रेफर करते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल प्रेफर टू स्टार्ट विद जावास्क्रिप्ट, ताकि फ्रंट एंड तो वो सीख रहे हैं, साथ साथ में वो लेटर ऑन बैक एंड में भी स्विच कर जाएंगे और उनको कोई इशू नहीं होगा, कोई नई लैंग्वेज नहीं सीखनी पड़ेगी. जो उनको ऑलरेडी आती है उसी को यूज़ करके वो वर्कआउट कर सकते हैं. ओके. सो आपने कुछ टैग्स के नाम सुना होगा, जैसे मीन स्टैक, मर्न स्टैक, तो ये जावास्क्रिप्ट के ही हैं. सो अगर आप एक डेटाबेस भी सीख लेते हो, सो या, these
these famous stacks work on are for JavaScript developers. एक्चुअली उन्होंने स्टार्ट किया फ्रंट एंड के साथ और अब वो बैक एंड भी कर पा रहे हैं. All right, cool. So let's move to the next slide, which is the history of JavaScript. And ये one of the ऐसी programming languages जिसको बनाने में सिर्फ 10 दिन लगे थे. Yeah, you can count on your hands. Just 10 days के अंदर ये create हो गई थी. और Netscape के developer हैं. उन्होंने इसको 10 days के अंदर create कर दिया था in 1995 में. Okay, sometimes हमको 10 days लग जाते हैं सोचने में कि हमें प्रोजेक्ट में बनाना क्या है. In planning we spend 10 days, but इन्होंने 10 days में एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना दी थी. So I guess one of the ऐसी लैंग्वेज सबसे फास्ट डेवलप हुई है. And yeah, seriously 10 days. And in early days इसका नाम JavaScript नहीं था, इसका नाम था Mocha or Mocha. I think Mocha is the right pronunciation. Mocha sounds like a coffee, but yeah, it was a language. But later on इसका नाम चेंज करके लाइव स्क्रिप्ट रख दिया गया. Okay, because लाइव स्क्रिप्ट रखने का आइडिया क्या था कि ये वेब पेजेस, इट ब्रिंग्स वेब पेजेस टू द लाइव. ओके, HTML एक स्ट्रक्चर है, राइट, एक जस्ट एक स्ट्रक्चर है, CSS उसके ऊपर एक डिजाइन है, बट जावास्क्रिप्ट एक्चुअली अलाउ यू टू इंटरेक्ट विद द वेब पेज. तो जिस वेब पेज के साथ आप इंटरेक्ट कर पाते हो वो लाइव लगता है. लाइक ये वाला वेब पेज जो आपके सामने खुला हुआ है, इट लुक्स लाइक अ लाइव वेब पेज बिकॉज आप इसके अंदर क्वेश्चन पुट कर पा रहे हो. यू कैन ऑल्सो पुट द स्टिकर्स. तो हम इंटरेक्ट कर पा रहे हैं. स्क्रॉलिंग चलो एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, डोंट, it's not that much, but yeah, you can interact actively with the web page. So that's why इसका नाम लाइव स्क्रिप्ट रख दिया. बट जब नेटस्केप एक्चुअली जावास्क्रिप्ट बनाई गई थी टू बी इन दिस वेब ब्राउजर व्हिच इज नोन एज नेटस्केप नेविगेटर 2. ओके, सो नेटस्केप नेविगेटर 2 के अंदर जावास्क्रिप्ट लाइक इस लाइव स्क्रिप्ट को यूज करना था, बट जस्ट बिफोर रिलीजिंग दिस प्रोडक्ट उन्होंने इसका नाम चेंज करके जावास्क्रिप्ट कर दिया. एंड ये बाहर आया विद द नेम जावास्क्रिप्ट वर्जन 1.0. ओके, और इसी के बाद एक जावास्क्रिप्ट 1.1 भी आ गया था, और ये आया था विद नेटस्केप नेविगेटर 3 के साथ. ओके, बट यहाँ से कुछ प्रॉब्लम्स आनी भी शुरू हो गई थी. लैंग्वेज तो बन गई थी, हमने इसको यूज़ भी कर रहे थे, और बहुत ही नई चीज़ थी. एंड कोई भी नई चीज़ मार्केट में आती है तो बिग जाइंट्स की जो नज़रें हैं वो बहुत जल्दी यू दे फाइंड सम ऑल्टरनेटिव, या फिर आप ही को बाय कर लेंगे. That's how MNCs work. I don't know. Either they will buy you or they will compete you. So और ऐसा काम करने में आई गेस माइक्रोसॉफ्ट का बहुत ही अच्छा खासा एक हिस्ट्री रहा है. if something happening in market, they try to capture it for the very first time. आप सबसे जल्दी कैप्चर करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट हमेशा आगे रहता है. ऐसा मैंने हिस्ट्री में ऑब्जर्व करा है माइक्रोसॉफ्ट के. सो जिस स्क्रिप्ट की मैं स्टार्टिंग में बात कर रहा था, सो दैट इज नथिंग बट योर जे स्क्रिप्ट, और वो बनाई थी आपके माइक्रोसॉफ्ट ने फॉर इट्स ओन ब्राउजर इंटरनेट एक्सप्लोरर. उस टाइम पे वर्जन 3 था, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर वर्जन 3 के साथ ये लैंग्वेज बाहर आई थी, जे स्क्रिप्ट. और ऑफ कोर्स नेम क्लैश ना करे जावास्क्रिप्ट और जो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है उनके बीच में नाम क्लैश ना करे. दैट्स व्हाई उन्होंने नाम जे स्क्रिप्ट रख दिया. बहुत ही थॉटफुल था ये नाम रखना. मे बी कुछ और भी रख सकते थे, बट they go for JSCRIPT. And as someone mentioned कि भाई ये it sounds like they thought कि ये वो JavaScript ही है. JSCRIPT and JavaScript same है. Yeah, but no. JavaScript was with this Netscape Navigator, and JSCRIPT is with Internet Explorer. तो ये दो different products थे, दो different अलग browsers के लिए. Cool. कैसा लगा ये
जान के JavaScript and JSCRIPT. Yeah. See, I believe कि अगर हम कोई भी टेक्नोलॉजी या फिर लैंग्वेज सीखने जा रहे हैं या फिर एटलीस्ट इट्स विद मी कि अगर मुझे उस लैंग्वेज का हिस्ट्री नहीं पता, व्हाट्स द आइडिया बिहाइंड टू क्रिएट दैट, ऐसी क्या जरूरत पड़ी एक नई लैंग्वेज बनानी पड़ी, तो आई रियली कुडंट रिलेट माई सेल्फ टू द लैंग्वेज. मेरे को समझ ही नहीं आता कि मैं क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज ये लैंग्वेज क्यों बनी थी. अगर इसका आंसर आ गया तो आई कैन लर्न दैट लैंग्वेज इजली. अदरवाइज इट विल बी लाइक कि सिंटेक्स ही तो लिखना है, वो तो कहीं से भी मिल जाएगा. यू कैन जस्ट ड्रैग एंड पिक द सिंटेक्स, ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो सिंटेक्स को. बट आई रियली feel connected to the language if I know some history of it. It's just me or anyone else finding this interesting? Great, great. Cool. So now let's move to the same here. Amazing. So it feels really nice to work with people with the same mindsets, right? Yeah, cool. Appreciate you all. Okay, so the next thing is your ECMAScript. So अभी तक JavaScript था, फिर हमने JScript के बारे में जाना. Now there is something known as ECMAScript. So सबके सब ये स्क्रिप्ट के पीछे पड़ गए इस टाइम पे, बट ऐसा नहीं है. Let me tell you what happens actually. JavaScript के पास कोई भी स्टैंडर्ड नहीं था, तो वो कोड बिल्कुल भी मेंटेनेबल नहीं था, स्केलेबल नहीं था. बस वो कोड था जो काम कर रहा है उस पर्टिकुलर टाइम पे, वो कोड वर्कआउट कर रहा था. ओके, बट कोई स्टैंडर्ड नहीं था, एंड दैट्स अ प्रॉब्लम. तभी उन्होंने क्या करा, जावा स्क्रिप्ट 1.1 जो नेटस्केप नेविगेटर 3 के साथ आउट हो चुका था, रिलीज हो चुका था, उसको इन्होंने दे दिया टू दिस यूरोपियन कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन. ये एक्मा इसी का एक्रोनियम है. ओके, एक्मा, ECMA. सो यूरोपियन कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन. और ये कब किया था? इन 1997. Okay, maybe a lot of people here were were not born by that time. जब जावास्क्रिप्ट को स्टैंडर्ड बनाने के लिए इस एक्मा को दे दिया गया कि भाई make it some standard. So they create something known as technical community 39, और इसका proper आपको document मिल जाएगा. Here I mentioned the read more वाला resource. इस website पे जाकर के आप you can read about it. Okay. And yeah, so technical community 39 came up with something known as ECMA 262, and that was a standard. और इस नई लैंग्वेज को जो उन्होंने बनाई है with this standard, they start calling it ECMAScript. Okay, so actually ECMAScript is nothing but your standard JavaScript, right? आप कह सकते हो कि एक्मा जो है वो आपको स्टैंडर्ड्स देता है और जावास्क्रिप्ट एक्चुअली उसको इम्प्लीमेंट करता है. सो लेटर ऑन जितने भी वर्जन है जावास्क्रिप्ट के, अब मैं चाहे जावास्क्रिप्ट बोलूँ या एक्मास्क्रिप्ट बोलूँ, एक ही बात लगनी चाहिए, बिकॉज द वर्जन ऑफ जावास्क्रिप्ट, द वर्जन्स ऑफ एक्मास्क्रिप्ट एक्चुअली अफेक्ट योर जावास्क्रिप्ट. सो या, और अभी आपको मैं हिस्ट्री भी दिखाऊंगा लाइक वर्जन्स की, कैसे कैसे रिलीज हुए थे. सो वो और सेंस करने लगेगी चीज़ें. बट फॉर नाउ गिव मी क्विक येस और नो. आपको तीन अलग के बारे में क्लियर हो चुका है, जावास्क्रिप्ट, जेस्क्रिप्ट और एक्मास्क्रिप्ट, राइट? इन तीनों में डिफरेंशिएट आप कर सकते हो. व्हाट आर दीज थ्री थिंग्स? जावास्क्रिप्ट, जेस्क्रिप्ट एंड एक्मास्क्रिप्ट. एनी क्वेश्चन? आस्क मी राइट नाउ.
Understood. Awesome. Cool. Right. Cool, everyone. So yeah, that's your three scripts: JavaScript, JSCRIPT, and ECMAScript. So now let me show you some versions of JavaScript. अब JavaScript के versions start with the JavaScript 1.0 के साथ 1.1 आया, then उसके बाद से let's see this. So JavaScript 1.0 was out on 1995. JavaScript 1.1 का exact मेरे को year नहीं मिला था, so मैंने इसको blank रखा हुआ है. Actually, it's not really important. ये दोनों ही versions अब important नहीं है because they submitted this JavaScript 1.1 to ECMA और ECMA का first edition out हुआ था with in June 1997. ओके. हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक पैटर्न रहता है टू रिलीज एनी वर्जन. इफ आई टॉक अबाउट पाइथन, पाइथन हर साल अक्टूबर में अपना वर्जन रिलीज करता है. सो वी आर वेरी क्लोज टू द अक्टूबर. सितंबर का ऑलमोस्ट लास्ट वीक ही चल रहा है, राइट? इसके बाद अक्टूबर स्टार्ट हो जाएगा, तो अक्टूबर में यू विल डेफिनेटली सी सम वर्जन ऑफ पाइथन. ओके. एंड इसी तरह से जावास्क्रिप्ट का रहता है. जावास्क्रिप्ट ने एक बार दिसंबर में रिलीज किया था, बट स्टार्टिंग से अब तक वो सारे पैचेस जून में ही रिलीज करता आ रहा है. सो या, एंड अगर आप लोग अभी तक गेस करो कि अक्टूबर ये जून 2020 में भी कोई वर्जन आया था क्या, तो यस, जावा एक्मा का एक नया वर्जन आया था इस जून 22 के अंदर. Cool. So I will be telling you that also. These are latest slides, so इसमें updated है सारी चीजें. So ECMAScript 1 या फिर आप कह सकते हो फर्स्ट एडिशन was out on 1997. फिर ECMAScript 2 आया 1998. ECMAScript 3 आया 1999. ओके, ये तीन वर्जन्स 3 साल तक लगातार आए. इसके बाद ECMAScript 4 भी आया था, बट वो कभी भी रिलीज नहीं हो पाया. बहुत सारे इश्यूज थे. आप कह सकते हो कुछ पॉलिटिकल इश्यूज थे इंटरनली, और कुछ कुछ फीचर्स को ECMAScript 4 के तो पूरी तरीके से ड्रॉप कर दिया, या फिर कुछ फीचर्स को ECMAScript 6 में इम्प्लीमेंट कर दिया गया था. सो कुछ इस तरह से रहा था. तो ECMAScript 4 कभी भी रिलीज नहीं हुआ. सो डायरेक्टली हमने ECMAScript 5 को ही देखा फिर दिसंबर 2009 में. और जो मैंने कहा था ना कि इन्होंने एक ही बार दिसंबर में रिलीज करा है, वो ये ECMAScript 5 ही था, जिसका 2009 में दिसंबर में रिलीज किया गया था. फिर ECMAScript 6 आया, और यहाँ पे उन्होंने ECMAScript 6 करके नहीं बोला, उन्होंने बोला ES6 या फिर ES 2015. ओके. अब ये ES 2015 नाम पढ़ते ही लग रहा है कि ये 2015 में रिलीज हुआ था, और ऐसा ही है. इसके बाद से इन्होंने एक फैशन बिल्ड कर लिया. अब ये ECMAScript 1 2 3 4 5 या फिर ES6 ऐसा कुछ नहीं बोलते. ये सिंपली से ES, और दिस ईयर वो रिलीज हुआ. सो जून 2016 में जो रिलीज हुआ वो बन गया ES 2016. जो 2017 में रिलीज हुआ वो बन गया ES 2017. 18 वाले को 2018 बोल रहे हैं. एंड यस, अब तक ये जो स्ट्रीक है वो कंटिन्यू है, और 2019, 20, 21 एंड 22 के अंदर भी. तो जून 2022 के अंदर वी हैव ES 2022. ओके. कितना इजी हो गया नाम याद रखना. कौन सा वर्जन चल रहा है, जस्ट रिमेंबर द ईयर कौन सा चल रहा है. ओके. सो दीज आर योर वर्जन्स ECMAScript के. तो अगर कोई जावास्क्रिप्ट के वर्जन पूछे तो या यू कैन आंसर कि भाई ES यानी कि ECMAScript 2022 वाला वर्जन इज द लेटेस्ट वन. Cool. Any question? No. Awesome. Okay. Excellent. So now we can go ahead to the next slide, which is nothing but your
सिस्टम रिक्वायरमेंट्स, सो इफ यू आर फॉलोइंग माय HTML CSS, तो वही सेम सिस्टम रिक्वायरमेंट से कोई चेंज नहीं है. एक मॉडर्न ब्राउजर होना चाहिए. डोंट गो फॉर द ओल्डर वन. एक मॉडर्न सा ब्राउजर हो आपका. आई ऑलवेज प्रेफर गूगल क्रोम. सो गूगल क्रोम को यूज़ करो. उसके रीजंस मैंने कल भी एक्सप्लेन कर रहे थे. सिंपल रीजंस है कि ये हमेशा अप टू डेट रहता है. मोस्ट ऑफ द डेवलपर्स या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रही है तो वो गूगल क्रोम पे ही करती है. So that's why Google Chrome is one of your best choice to have. Okay. Otherwise, modern browser के अंदर you have all your Brave browser, your um, Firefox. कोई भी आप use कर सकते हो, no issue. But I highly prefer Google Chrome. Then pick any text editor. VS Code use कर सकते हो, Sublime use कर सकते हो, कुछ भी use कर सकते हो. Most of the people go for Sublime. Most people go for this one, VS Code. Okay, so VS Code के अंदर you get a very nice text highlighting. अगर IntelliJ ऑन कर लोगे by downloading some extensions तो आपके कोड को कंप्लीट भी करने लगेगा. So ये सारे फायदे आपको मिल जाते हैं. Cool. So yeah, you can go for VS Code. हार्डवेयर के लिए you should have some sort of system. Windows होना चाहिए, Linux होना चाहिए. तो कोई भी सिस्टम पिक करो. If you are doing some development, तो I recommend Linux operating system पे करो. But जैसे मैंने कल भी पूल किया था, most of the people are on Windows, right? So yeah, so that's why आप Windows वाला सॉफ्टवेयर साथ डाउनलोड कर सकते हो. No issue, Windows में भी कर सकते हो. But try to switch धीरे धीरे to the Linux. विंडोज 7 और हायर कोई भी चल जाएगा. और 4 GB ऑफ रैम मिनिमम चाहिए होगी. 4 GB ऑफ रैम आपको काम करने के लिए. Cool. Then these are help videos. ये videos lectures हैं और फ्री में आप इनको एक्सेस कर सकते हो. These are on your YouTube only. तो yeah, so this is my text editor. This is editor जो मैंने बनाया था. And these links for VS Code, Windows के लिए और Linux के लिए. Okay, so you can have it. एंड मॉडर्न ब्राउजर के अंदर ये सारी लिस्ट है. सफारी इफ यू आर ऑन अ मैक, सो यू कैन गो फॉर सफारी. माइक्रोसॉफ्ट एज यूज कर सकते हो. इट्स अगेन अ ब्रेव, इट्स अगेन अ मॉडर्न ब्राउजर. ब्रेव है आपके पास, ब्रेव यूज कर सकते हो. फायरफॉक्स वर्क्स. बट या टॉप पे हमेशा आई प्रेफर गूगल क्रोम. या सुनील. Okay, you attending for the very first time. Yeah, I create my own text editor. Actually, I create my own text editor in 3 different languages. अपने ही एडिटर को 3 बार बनाया. First time I created using C#.NET, then I create in Python, then I create in C language. And out of all these three, I believe so C language वाला था वो सबसे ज़्यादा powerful है, because it has the advanced features like having multiple tabs. जैसे आपके VS Code के अंदर multiple tabs होते हैं, उसी तरह से you can have multiple tabs in my C language वाला text editor. Yeah. Cool. So you will be wondering कि C language में कैसे GUI application. तो उसके लिए भी फ्री कोर्स है YouTube पे. Okay, so let me share my entire screen और आप चलते हैं थोड़ा सा कोडिंग वाले पार्ट पे, because we have talked about JavaScript a lot. So let me stop sharing and let me share my entire screen. Okay, so this is my entire screen. Alright, so let's open the VS Code. So I'm on my Mac, but I don't recommend you to use Mac or buy Mac. I'm so sorry, Apple, but yeah. Hide कैसे हो गया? Okay, cool. So now here I will create a new file and let's call it एक HTML file ही create कर लेते हैं, and I will call it index.html. Okay, and let me also give you my YouTube channel link, since I mentioned it. So you can simply say YouTube/C/educators. Cool. So see, मैं directly इस पे land हो गया. I really like these URLs. So yeah, here it is.
This is a free course, GUI in using C language. Have fun with this one. चलो अब वापस इस पे आते हैं. You will be like JavaScript सीखने हैं तो C नहीं सीखेंगे. Okay, and I opened the chat window here. बार बार बंद हो जाता है. So yeah, if you have anything, just put in the chat. Once again, your chat window is your best friend. Always use it um, to ask any question. Okay, कहीं first जाओ if you find कि ये क्यों correct, so you can directly put in the chat. I will be keep on looking at it. Cool. So let's start with a very simple HTML code. I would say doc type HTML, and then let's say we have something known as HTML. Then there is a head tag, and there is a body tag. Cool. So in head tag, let's give a title: Learning JavaScript on Friday night. Yeah, I appreciate you all for doing this. You all spending 1 hour long with me on a Friday night. Really awesome, guys. Yeah. Cool. Okay, so what I want, I will be creating a simple, let's say, heading H1, and I will say, "Welcome to educators." Okay, or I will be having a paragraph. So paragraph में हम बोलेंगे effortlessly with my bot because I'm going to show you a wonder. So let's open it. I will copy its path and let's go to your browser, paste it here, and see. It simply says welcome to educators because हमने और कुछ लिखा भी नहीं है, एक ही चीज लिखी थी welcome to educators, and it's showing on me, it's showing me on the web page. Cool, but JavaScript कहाँ है? Because we want to implement in JavaScript. So for that we use something known as script tag. और script tag को आप actually head tag में भी put कर सकते हो, और but as per the analysis थोड़ा सा आपके पेज को स्लो कर देता है, but no worries, we can go ahead and write it because बहुत बड़ी scripting नहीं लिखने वाले. That this will be a very simple one. So I will say document dot write, and since this is the first program we are writing, so I will say hello world. So you will see a magic. I will save it and see. अभी जो हमारा last output था वो कुछ ऐसा कहता है welcome to educators. If I do a refresh and see what it says, hello world. Yeah, so that's your first program in JavaScript where you write hello world. Cool, interesting. Yes, no. Hmm. Awesome. Okay, cool. I can't find my bottle. Okay, so let me show you. अगर आप script tag को if you just remove the script tag from head और यहाँ पर आकर के आप लिख देते हो. Okay, so what I'm doing here, before closing your body tag, I'm writing the script tag. Okay, most of the people do like that, like they don't prefer to put your script tag in the head section. They say it will slow down your page loading. Okay, so what's the alternative? Put your script tag at the very bottom of your page.
राइट, क्योंकि HTML पेज भी एक एक लाइन करके लोड होता है. बट एवर यू राइट इन हेड, सबसे पहले हेड वाली चीज़ें रेंडर होती हैं, फिर उसके बाद बॉडी वाला पार्ट शुरू होता है रेंडर होना, एंड एक एक करके सारे टैग्स जो है वो रीड होते हैं और चेंज होते हैं टू दी प्रेजेंटेबल, इन द प्रेजेंटेबल फॉर्म. ओके, तो दैट्स वाई अगर आप बहुत हैवी CSS लगा देते हो तो वो वेबसाइट थोड़ा ज़्यादा टाइम लेती है, टू टू लुक नाइस. ओके, बट उसका भी हमने कुछ तरीके निकाल लिए, थोड़ा एसिंक्रोनस तरीके निकाल लिए टू टू लोड द हैवी हैवी CSS, और प्लस ज़्यादा लोड भी नहीं लेगा. So yeah, okay. So let's refresh this page. What will happen? Let's see this. See, again I'm getting hello world, but it's coming after welcome to educators file line. Cool. So that's how you can implement your JavaScript in the web page. Okay. More things we can do. Let me show you one more thing. Instead of document, I will say console, and instead of write, I will say log. So, this is another function that we use in JavaScript, console.log, and it is actually used to write in your console. Okay, so let me show you where you will find console on your web page. So this is your web browser. Simply, if you do a refresh, तो hello world by line चली जाएगी because हमने वो remove कर दिया है. Instead of writing in document, I'm writing in a console. So ये console कहाँ मिलेगा? So you can go for view and then developer options. But if you're on any other system, क्योंकि Mac में तो ऊपर मिल जाता है views, but अगर आप किसी और system में हो, Linux पे हो या फिर Windows पर हो, so you can go for a shortcut. I think it's F12. Okay, in for developer mode it's F12. Otherwise अगर कुछ भी नहीं करना तो you can do a right click थोड़ा खाली जगह पे, and then you can go for inspect. It won't show up on the web page. Yeah, yeah, it won't show on the web page. Cool. It will be displayed on your console because this time we are saying, hey console, please log this message. Okay, we are saying, hey console, log this message, which is hello world. So I'm telling you where you will find your console. So to find your console, right click anywhere and click on inspect. It will open this sort of thing. इसको developer mode कहते हैं. Okay, and here only you will find the console. You see console. अगर नहीं दिखता है तो you can click on this one, ऐसे double arrows, और यहाँ पे आपको console मिल जाएगा. If I do a zoom, so I can't see console anywhere. So click on this double arrow thing, and here click on console. And it's saying uncaught reference error, console is not defined. Okay, I misspelled something. It's console. It's console. Now do a refresh and see. I'm getting hello world. Don't misspell the commands. I don't know why I did that. Unintentionally, of course. This is like print statements. Yes, correct. It's just like your print statement. In Python, you have print function, and C it's printf. Go to C++, it's C out. Go to Java, it's system.out.print. Yeah, वैसे ही यहाँ पर you have console.log. So keep this shortcut handy, F12, because when you're working with JavaScript, we try to do a lot of console.log to actually debug your code. Okay, so whenever we need to put some debug messages, we write console.log. Okay, we never go for document.write. That will affect your web page. I don't want to disturb the web page. I want some messages, but Alexa. So here you will find the console. A lot of things are here, बस console नहीं, काफी सारी चीजें यहाँ पर है. So if you go to elements,
You will find all your HTML elements. You can go to the selector, and जहाँ पर भी आप hover करोगे, it will show you the that particular code. Okay. So I think आप familiar हो गए, because when we are working on web तो ये कुछ developer options हैं, इनके साथ थोड़ा सा familiar हो जाओगे तो ज़्यादा better रहेगा. Okay, or if you need another stream जिसके अंदर I will be explaining these developer options. Okay, we can have a pool on it. What sort of streams you want on what topic? Okay, so जैसे मैंने कल भी mention किया था, we can plan out the October का schedule. So join that WhatsApp group. मैं लिंक वापस से शेयर कर दूंगा अगर वो बहुत ऊपर चला गया तो. So join that WhatsApp group, और वहाँ पे I will put a question कि कौन से topic पे आपको stream करनी है. So you can poll on that. Okay, so we can together decide कि कौन से topics हमें सीखने हैं. It's a consortium. And yeah, consortium से याद है, next week is more on blockchain. I don't know कि अभी creator पे um, schedule हो गए कि नहीं, but next week is जो भी lives हैं वो maybe blockchain के ऊपर हैं. Don't miss it. Blockchain is the next thing we are working on. जो भी आप यहाँ पे सीख रहे हो, this is web 2.0. But, uh, the next thing coming to the space is web 3.0 या फिर web 3 you can call it. So blockchain के ऊपर काफी सारी चीजें हैं next week के अंदर. So yeah, don't miss it. Okay, cool. So any question till here? जैसे हम जो भी कार्यक्रम कर रहे हैं, anything? कहाँ चले जाता है ये? No, everything is clear. Cool. So if we are good with it, so let me see if I have something. Few more things. Okay, cool. So maybe more or less यही था जो मेरे को आज के स्ट्रीम्स में डिस्कस करना था. And if I conclude everything कि हमने क्या क्या आज सीखा, so we have done a lot of work with your understanding part कि भाई ये JavaScript क्या था, history क्या थी JavaScript की, JavaScript और JScript में क्या difference थे exactly, and we see ECMASCRIPT क्या था. अच्छा, एक और होता है which is TypeScript. So TypeScript is actually again coming from the Microsoft. और ये थोड़ा सा आप इस तरह इमेजिन कर सकते हो, यू हैव जावास्क्रिप्ट के ऊपर यू हैव ECMA 6, एंड देन यू हैव सम मोर स्ट्रिक्ट टाइप्स. ठीक है, थोड़ा सा डेटा टाइप को लेकर स्ट्रिक्ट हो जाता है, कुछ और फीचर्स ऐड कर दिए और इन सबको मिला दो तो बन गया टाइप स्क्रिप्ट. सो माइक्रोसॉफ्ट मोरलेस ऐसे ही काम करता है. मोस्ट ऑफ द थिंग्स I can't complain, but yeah, it's work like that. Okay, so yeah, that's your TypeScript. So JavaScript के अंदर कुछ और फीचर्स ऐड कर दो, फिर आप कह सकते हो ECMAScript के अंदर कुछ और फीचर्स ऐड कर दो, it will become TypeScript, and it is coming from the um, Microsoft. और अगर आप कोई when we will use console.log and document.write. Okay, good question. Console.log we use most of the time. We don't go for document.write because document is a global object, or write उस पे करना is a risky part. You might unintentionally change your output of the web page. आप changes कर सकते हो, maybe intentionally or unintentionally. So we never go for document.write. I just show you because it's a possibility that we can do, and then I show you console.log because that's what we are going to do most of the time. Okay.
So console.log, same reasoning कि हम क्यों use करते हैं, because for debugging, right? So we use print in other languages to debug. Similarly, we use console.log to debug or actually print some messages. Okay, but yeah, in JavaScript, most of the time it's debug. Okay, so in programming, we use only console.log always. Yeah, always. Document वाले object को हम कब use करेंगे? I will tell you. There is something known as DOM. There is DOM is nothing but your interface है, आप कह सकते हो API है जिसको use करके you can make changes in your HTML pages. ओके, सो वहाँ पे हम डॉक्यूमेंट वाले ऑब्जेक्ट को यूज़ करेंगे और वहाँ पे बहुत केयरफुली यूज़ करेंगे, राइट? बिकॉज व्हेन यू आर यूजिंग जावास्क्रिप्ट एक्चुअली बाय एक्सेसिंग दैट डॉक्यूमेंट, क्योंकि ये सबसे टॉप लेवल का ऑब्जेक्ट है, बाकी सारी चीज़ें इसके अंडर आती हैं. सो इफ़ यू एक्सेस डॉक्यूमेंट तो आप कुछ भी चेंज कर सकते हो कहीं पर भी. सो वी हैव टू एक्सेस दिस डॉक्यूमेंट वाला थोड़ा सा ध्यान के साथ. ग्रेट. And then we talk about JavaScript versions. So ECMASCRIPT के जो versions है, JavaScript के versions है, बहुत confusion create करते हैं. तो मैंने कोशिश करी कि ये confusion आपकी साइड से kill कर दूं. So probably I did that. Then I talk about system requirements and then text editors and installing the modern browser. That's all you need to start with JavaScript. Okay, and that's your um, फर्स्ट इंट्रोडक्शन विद द जावास्क्रिप्ट. सो आज जिन्होंने फर्स्ट टाइम जावास्क्रिप्ट सुना या फिर दे वर फ्रेशर्स, उनको काफ़ी कम एक्सपीरियंस है जेएस के साथ. सो आई थॉट आई हेल्प्ड यू अ लॉट इन अंडरस्टैंडिंग द अंडरस्टैंडिंग दिस लैंग्वेज.